Hello, good morning class. In the last video, we are discussing chapter number 2, units and measurement, in which we have reached up to the topic error. Basically, error are measured in two ways, systematic error and random error. We have discussed systematic error, in which some sources of systematic errors are instrumental errors, imperfection in technique and procedure, and personal error. There are three types of sources due to which the systematic errors arises. We have discussed the instrumental errors. Now, today we are going to discuss the next sources of errors. Second one is imperfection in experimental technique और procedure. That is, इसके जैसे आपको इसके मीनिंग से ही लग रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन को लेने के लिए, उस टेक्निक में ही अगर इम्परफेक्शन है, that just because of that imperfection there will be an error. So that error will be systematic error. For example, you can say to determine the temperature of the human body, a thermometer placed under the armpit will always give a temperature lower than the actual value of the body temperature. That is, जब हम थर्मोमीटर को आर्मपिट के अंदर रखते हैं सो दैट कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमें मेजर हो जाए, तो वो जो टेम्परेचर है दैट इज ऑलवेज लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर. सो दिस इज द टेक्निकल और यू कैन से एक्सपेरिमेंटल टेक्निकल इम्परफेक्शन, जिसकी वजह से हमारी एरर अराइज हो रही है. नेक्स्ट वन इज पर्सनल एरर. जैसा कि अगेन इसके आपको मीनिंग से ही आपको समझ आ रहा होगा कि पर्सनल एरर क्या होगी. जो ऑब्जर्वर होगा उसकी खुद की वजह से, उसके सेल्फ डिसीजंस, उसकी सेल्फ ऑब्जर्वेशंस की वजह से जो एरर अराइज होंगी, दोज एरर्स विल बी नोन एज पर्सनल एरर्स. सो पर्सनल एरर्स अराइजेस ड्यू टू एन इंडिविजुअल्स बायस. कोई भी इंडिविजुअल जो होगा, जो ऑब्जर्वर होगा, उसकी वजह से हमारे पास क्या होंगी, ये एरर्स आएंगी. जिसमें क्या क्या आपका इंक्लूड होगा, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द apparatus, दैट इज if the apparatus is not properly set, or individual's carelessness in taking observations without observing proper precautions. If there is a need of taking proper precautions, and if the observer is not taking that precautions, then just because of the carelessness of that observer there may be some errors. Then these errors are just because of that observer. So these errors comes in the category of personal errors, which comes under the systematic error. For example, you can say if you hold your head a bit too far to the right while reading the position of a needle on the scale, you will introduce an error due to the parallax. हमने पैरालैक्स या पैरेलैटिक एंगल में हमने देखा था किसके लिए था, वो जब हम फार अवे जो पोजीशन होती थी, फार अवे जो ऑब्जेक्ट्स होते थे, उनकी अगर हम एंगल फाइंड आउट होते तो दैट वाज द पैरालैक्स मेथड, और यू कैन से दैट वाज द इनडायरेक्ट मेथड. सो हियर वी आर टेकिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्केल of a needle on the scale. So if we put our head at a far distance, तो उस फार की वजह से हमारे जो दोनों आईज हैं, वुमेन की जो दोनों आई हैं ऑब्जर्वर की, उन दोनों लेफ्ट और राइट आई के बीच में जो आपका एंगल बनता है दैट विल बी द पैरेलैक्स एंगल, एंड दिस पैरेलैक्स एंगल विल इंट्रोड्यूस एन एरर दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल बायस, दैट इज द पर्सनल एरर. नाउ we have discussed all the three types of sources which arises the systematic errors, in which the first one was instrumental, second one was imperfection in experimental technique or procedure, while the third one was personal error. Now, systematic error can be minimized by, what are the you can say solutions for the minimizing the systematic errors. तो फर्स्ट वन हमारी क्या थी कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को ही इम्प्रूव कर लें तो हमारी एरर क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी. नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स बेटर हो सो दैट कि उनकी जो इनबिल्ट जो उनकी एरर्स हमें दिखाई दे रही है वो एरर्स ना आए. थर्ड वन इज रिमूविंग पर्सनल बायस एज फार एज पॉसिबल, दैट इज ऑब्जर्वर जो है वो अपनी वजह से
जितनी मैक्सिमम उसकी वजह से वो क्या कर सकता है, अपनी केयरफुली जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ले सकता है, सारी प्रिकॉशंस लेके, तो उससे भी हमारी एरर्स क्या हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी. सो दिस इज अबाउट द systematic errors. Now come to the next point of error. This is random error. Random error, as its name defines, random, that is ki that doesn't have any proper configuration, you can say. Random errors are those errors which occur irregularly. वहाँ पर हमारा क्या था सिस्टमेटिक में, that may be in positive direction or that may be in negative direction, that is in a systematic manner. But in terms of random error, these errors are irregular and hence random with respect to sign and size. That is, एक बार ये पॉजिटिव हो सकती है, अगले ही टाइम में जब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन लेंगे तो आप, तो रैंडम एरर आपकी कैसी आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है. सो ये रैंडम है विद रिस्पेक्ट टू साइन, और इसके जो साइज है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट इन ईच ऑब्जर्वेशन. सो रैंडम एरर्स आर इरेगुलर एंड random with respect to sign and size. These type of errors are random errors. These can arise due to random and unpredictable fluctuations in experimental conditions. ये किसकी वजह से आती हैं, जो रैंडम है और जो अनप्रिडिक्टेबल है, जो कभी भी आ सकते हैं आपके. फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, पर्सनल एरर बाय द ऑब्जर्वर टेकिंग रीडिंग एटसेट्रा. दैट इज की एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में फ्लक्चुएशंस आ जाएं. पर्सनल एरर, जो पर्सन ले रहा है, जो ऑब्जर्वर है, उसकी रीडिंग्स में पर्सनल एरर की वजह से भी हमारी क्या आ सकती है, रैंडम एरर अराइज हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द सेम पर्सन रिपीट्स द सेम ऑब्जर्वेशन, it is very likely that he may get different readings every time because of his personal points of taking observation. So these type of error are random error. Next is least count error. Least count error basically comes under the factor random error. Least count error. Firstly we will discuss what is least count. Least, that is minimum count, that is you have to count something. The smallest value, minimum value that can be measured by the measuring instrument is called its least count. जो भी हमारा measuring instrument है, उस instrument से आप smallest value, उसका least value आप कितना calculate कर सकते हो, that is simply its least count. That is least count जो होगा वो आपका किसका होगा, instrument का होगा. The least count error is the error associated with the resolution of the instrument. Resolution हमने इससे पहले देखा था जब हमने error, accuracy और precision देखा था. तो बेसिकली resolution और precision सेम थिंग है, जो कि ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी डेप्थ तक आपके रिजोल्व आप कर पा रहे हो. तो लीस्ट काउंट एरर इज एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि कितना आप उसको लाइक हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि 0.01, 0.001 एंड 0.0001. सो while the three digits are present after decimal, that has the maximum resolution. Similarly, you can say the least count errors present in the instrument. So next is, for example, if we take an example of vernier caliper. Vernier caliper and spherometer are two instruments which we will discuss in our practicals as well. So vernier caliper has a least count of 0.01 centimeter. That is here the 1 by 100 part of any 1 by 100 part of any centimeter is the least count of the vernier caliper. While the sperometer's least count is 0.001. So इसका रिजोल्यूशन स्पेरोमीटर का ज्यादा है रेदर देन आपका वर्नियर कैलिपर. नेक्स्ट, यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर प्रिसीजन, दैट इज की हायर रिजोल्यूशन, इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एटसेट्रा, वी कैन रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर. Yes, if we take the instrument with higher resolution, or you can say higher precision, and if we improve the experimental techniques as well, least count error can be reduced. Next, repeating the observations several times and taking the arithmetic mean of all the observations, the mean value would be very close to the true value of the measured quantity. If you are taking observation several times, then what happens?
योर एरर फ्लक्चुएट्स, यू कैन से कि कभी सपोज करो कि हम कोई एरर ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू क्लैरिफाई यू। सपोज करो हमारी कोई रीडिंग आ रही है जिसकी वैल्यू 5 है और आप बहुत बार उसी एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन करो, कभी वो 5.01 आती है, कभी वो 4.99 आती है, कभी वो 4.999 आती है, कभी वो 5.0001 आती है। अगर आपने सेवरल टाइम्स ये ऑब्जर्वेशन लिया है एंड इफ यू टेक द अर्थमेटिक मीन बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। If you take the arithmetic mean of the all the observations, the mean value जो आएगी आपकी that will be very close to the true value of the measured quantity. Basically अगर मैं बोलूँ 4.99 और 5.01 का mean value क्या हो जाएगा 5, और 5 हमारी कैसे लेके चले थे हम अपने एग्जाम्पल को, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा था 5 was the true value। तो जो नियरली हमारी कैसी आती है, वेरी क्लोज आती है, जो मीन वैल्यू होती है वो किसके, ट्रू वैल्यू के। So come to the next point. Now there are 3 types of error. First one is absolute error, while the second one is relative error and the third one is percentage error. Absolute error जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई वैल्यू कैसी हो, एब्सोल्यूट हो, दैट इज एग्जैक्ट हो वो वैल्यू। सो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, एरर की टर्म में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, देन व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट एरर, the magnitude of the difference between the individual measurement value and the true value of the quantity। एक तो हमारे पास क्वांटिटी का क्या होता है, ट्रू वैल्यू होती है, और दूसरी हमारे पास कैसी होती है, जो ऑब्जर्वर आपका एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं उसके इंडिविजुअल मेजरमेंट्स होते हैं। सो इंडिविजुअल मेजरमेंट और जो ट्रू वैल्यू है उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, नॉट द साइन, ओनली द मैग्नीट्यूड, हियर वी आर कंसीडरिंग द मैग्नीट्यूड ओनली। So that will be the absolute error of the measurement. This is denoted by modulus of delta A. Delta A is denoted by absolute, and modulus is just because we are considering here the magnitude only. So if we take modulus, then the negative value also converts in the terms of positive value. Next, in absence of any other method of knowing true value, अगर हमें कोई भी true value नहीं पता है, कोई भी method, we consider arithmetic mean as the true value. So अब हमें नहीं पता है, now we have to calculate the absolute value. तो हमें इंडिविजुअल मेजरमेंट तो हमारे पास आ जाएगा जो हमारी खुद के ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन ट्रू वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे कि हम उसकी मीन वैल्यू निकालेंगे, जो मीन वैल्यू होगी उसी को हम कंसिडर करेंगे एज ए ट्रू वैल्यू। सो मीन वैल्यू कैसे निकालोगे, ए मीन विल बी इक्वल टू जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपने ली है A1 + A2 + A3 + AN अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज n ली है तो अपॉन n। A mean is equal to summation of this I will be equal to 1 will comes here, the summation up to the n, I will come from 1 to n, और A1 A2 AN को आप क्या लिख सकते हो, these are AI upon n। How you can open this, you are familiar with this in 10th class, summation will give you the sum, that is 1 + 1 1 + 1। I की जो वैल्यू मैंने यहाँ पर आपका स्केल दिखा रखा है, I ये जो I = 1 है ये समेशन के यहाँ आएगा नीचे, और जो n है ये इसकी अपर लिमिट होगी। तो I की जो वैल्यू है वो आप I1 से लेके और n तक का पुट करते जाएंगे, तो आपका यही स्टेटमेंट बन जाएगा। When you will put I = 1 then A1, then summation जैसे प्लस, then I = 2 + A2 + A3 + AN upon n। So A mean will be equal to summation AI upon n, I belongs from 1 to n। The errors in the individual measurement value from the true value are, क्या बोलोगे आप एरर्स को कि इंडिविजुअल की किससे होगी, ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू हमने क्या कंसीडर करी है अभी, आपकी मीन वैल्यू, तो डेल्टा A1 will be equal to A1 minus A mean, डेल्टा A2 will be A2 minus A mean। Similarly, डेल्टा A calculated above may be positive or negative, but absolute error जो होगी that is always positive। So here we are taking the modulus of this value। So this is the term of absolute value। Come to the next point। Okay students, we will discuss some more points in the next video, and we will discuss also some examples, or you can say some numericals in the next video। Thank you, go through it। I hope
you will be clear all the doubts, all the things if you